मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 80 दिन से मुकम्मल नाकाबंदी और लॉकडाउन है। पूरी वादी में अगर कुछ है तो चप्पे चप्पे पर काबिज भारती फौजी हैं और निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम हैं। मजलूम कश्मीरियों की फरियाद बहरहाल अब अमरीकी कानून साजी के ऐवानों तक पहुंच गई है और कल इस सिलसिले में अहम दिन था जब अमरीकी कांग्रेस के इजलास में भारतीय पॉलिसीज पर इतनी लानत मलामत मजम्मत की गई कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया हक्का बक्का रह गए। अमरीकी कांग्रेस की बाअसर खारजा उमूर कमेटी के अरकान ने ब्रेट शेरमैन की सरबराही में अमरीकी नायब वजीर खारजा एल्स वेल्स की खूब खिंचाई की और ट्रंप इंतजामिया से सवाल किया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर क्यों खामोश है। अरकान कांग्रेस ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया है। 10 साल की उम्र के बच्चों तक को गिरफ्तार किया गया है। Hundreds, if not thousands, of political and civil society leaders have been detained. There are severe restrictions on the freedom of movement, freedom of the assembly, just the ability to walk out of your house. Children as young as 10 years old have been, quote, preventatively detained under the Public Safety Act. Reports of arbitrary killings, enforced disappearances, and violence and discrimination based on religious affiliation. I am deeply concerned about the religious intolerance and the ways in which the Indian democracy is being subverted, for example, through these detentions. I can't think of too many circumstances under which, from a strictly law enforcement and counterterrorism point of view, you need to deny the entire population access to communications. They're using some kind of pellet gun that is harming children and blinding them. And so they're now being able to say, oh, no one's died, there's been no fatalities, but they're maiming children. अमरीकी कांग्रेस की मुसलमान रुकन इल्हान उमर ने हिंदू कौम परस्त पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कश्मीर के अलावा आसाम में भी ज़मीन तंग की जा रही है मुसलमानों पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ जराइम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। We have to understand the situation in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the PJP. The impunity we have seen for crimes against Muslims under the PJP was warming for such worse things to come. In Assam, almost 2 million people are being asked to affirmatively approve their citizenship. The Indian government is starting to build camps in Assam, presumably to hold those who are unable to prove their citizenship. This is how the Rohingya genocide started. At what point do we no longer share values with India? Are we waiting for the Muslims in Assam to be put in those camps? कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ने ट्रंप इंतजामिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी इंसानी हुकूक से सवाल किया कि क्या जम्मू कश्मीर में इंसानी अलमिया ने जन्म नहीं लिया, जहां डॉक्टर्स कैद है, इलाज मालजे के लिए ज़राए नहीं हैं, आमद और रफ्त और राब्ते मुनक़ता हैं, क्या ये इंसानी अलमिया नहीं? इस पर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि हाँ, ये एक बड़ा इंसानी अलमिया है और तबाही है, और उसके इस बयान को अमरीकी नुमाइंदगान में ज़बरदस्त पजीराई मिली। Do you see this as a human rights, a humanitarian crisis? I mean, we have to act when there is a crisis. Do you see this in Jammu and Kashmir as a humanitarian crisis when doctors are locked up, when people cannot have access to medical care, and the basic, if you will, tools of communication and connecting to one's loved ones is denied? Is this a humanitarian crisis? Yes, it is. I mean, it's a, Ms. Jackson Lee, from a 72,000-foot perspective, it's a crisis. To the individual families who are involved, it's a disaster. ताज्जुब की बात है कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नायब वजीर खारजा ने अमेरिका की किसी ठोस पॉलिसी के ऐलान के बजाय भारतीय मजालिम पर रस्मी जवाब पर इक्तफा किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के 3 साबिक चीफ मिनिस्टर्स भी ज़ेर हिरासत हैं। अमेरिका भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त करता है कि कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाएं और जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। We've been closely monitoring the situation in the aftermath of India's August 5 decision to abrogate Article 370 of its constitution. We share the concerns expressed by many members of Congress and their constituents about the manner in which Indian authorities have implemented that decision.
The department has raised its concerns with the Indian government about the continued detentions of hundreds of local residents and political leaders, including 3 former chief ministers of Jammu and Kashmir. We have urged Indian authorities to restore full access to internet and mobile phone services and to hold promised assembly elections at the earliest opportunity. امریکی کانگریس میں کل اس انتہائی اہم ہیئرنگ کے بعد بھارتی میڈیا ہکا بکا نظر آیا. آج بھارتی اخبارات نے کہا کہ امریکی کانگریس جو ہے وہ غلط راستے پہ چل رہی ہے. امریکی میڈیا غلط تصویر دکھا رہا ہے اور اس حوالے سے تنقید کی گئی اور صرف ان پورشنز کو شائع کیا گیا جہاں پر بھارت کے لیے کہیں پہ کوئی راحت کا سامان تھا، ورنہ اس پوری ہیئرنگ کو امریکی کانگریس کی شدید تنقید کی گئی ہے بھارتی میڈیا میں. اس حوالے سے امریکی جو رویہ دیکھنے میں آیا ہے، خاص طور پہ امریکی کانگریس کے اندر جو رویہ دیکھنے میں آیا ہے، بھارتی حکومت کی جانب سے بھی اس پر اپنے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اس پورے معاملے نے امریکی کانگریس کی اس ہیئرنگ نے کشمیر کے حوالے سے بھارتی پالیسی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، یہ کہنا ہے ماہرین کا.